Good evening, dear students. Welcome to Matrix DigiLearn, and today we'll discuss about the computer awareness. The questions are on your screen. The first question for you: a dash is an electronic device that processes data, converting it to information. The options are processor, computer, case, stylus, none of these. A dash is an electronic device that processes information, process data, converting it to information. Which option is the right answer? You may give the response by chat. तुम response दे परिवो chatting रे ये मानको भितरु कोठा होची ठीक आंसर. Option B is the right answer. Yes, option B is the right answer. Computer is the right answer. Next question for you. Which of the following is a network where a huge computer does all computing and front end PCs are DOM terminals? एमानक भितरु कोटा होची से नेटवर्क जोटी की अनेक गुडाय कंप्यूटर कंप्यूटिंग काम करंती and front and end PCs with the terminals. Option A, client server. Option B, mainframes. Option C, master slave. Option D, internet. Option E, none of these. Which of the following is the network where a huge computer does all computing and front end PCs are DOM terminals? Anyone can give the response? The right answer is option B, mainframe. Mainframe is that computer where a large number of persons work at a time. Mainframe होची एमिति गोटे कंप्यूटर जोटी की गोटे समय रे अनेक गुडाए यूजर बसी काम करंती. अनेक गुडाए यूजर सेथरे बसी कंप्यूटर रे गोटे समय रे काम करि पारंती. एंड एटा जो तमे कहूचो जे मेनफ्रेम कंप्यूटर बेसिकली एटा जोटा कहूचो वेदर टेलीकास्टिंग ऑटोमिक पावर रिसर्च ए सब काम पय व्यवहार कर जाय. आणविक गवेषणा हमर जोटा कहूची पाणीपाग सूचना तो एथि पय का हमर मेनफ्रेम कंप्यूटर को व्यवहार कर जाय. तो एथि लार्ज नेटवर्क माने बहुत बड़ नेटवर्क हेता है. अनेक गुडा यूजर बसी गोटे समय रे काम करिथान. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Which of the following is the fastest? Which of the following is fastest? Options are hard disk, option B tapes, option C floppy disk, option D C disk, and option E none of these. Which of these fastest? एमानक भितरु कोटा होची fastest? Yes, option A is the right answer. Hard disk. Hard disk टा होची बहुत fastest. कारण आमे कंप्यूटर रे जोटा स्टोरेज डिवाइस मुख्य स्टोरेज डिवाइस सेटा तो हार्ड डिस्क. तो हार्ड डिस्क रे थिबा इंफॉर्मेशन गुडा को अन्य कोनोसी स्टोरेज डिवाइस अपेक्षा अधिक फास्टेस्ट रे असेसिंग हेता है. इस ऑप्शन ए हार्ड डिस्क इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट इज ईडीआई? ईडीआई मींस कोन? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट इंटरफेस. ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस इंटरफेस. ऑप्शन सी electronic data interface. Option D electronic data interchange, and option E none of these. Option D is the right answer. Electronic data interchange EDI. EDI द्वारा हमर कोन करिवे एक्सचेंज बिजनेस डॉक्यूमेंट्स. बिजनेस डॉक्यूमेंट गुडा को जहां भी सेल्स रिपोर्ट परचेज रिपोर्ट एडा सब शेयरिंग करा जाय. तो एटा गोटे सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम जहां माध्यम रे एक कामटा करा जाय. सो ऑप्शन डी electronic data interchange is the right answer. Next question for you. Which of the following
is a component of internet? Which of the following is a component of internet? एमानक भितरु कोटा इंटरनेट रो एक component बा उपादान. Repeat us to establish physical connection between various LANs, routers to strengthen the accurate authenticated signals, gateways to allow a network to use the resource of another mainframe. Option D, bridges to optimize the transmission path of the messages, and option E, none of these. Which of the following is a component of internet? एमानक भितरु कोटा इंटरनेट रो गोटे component. Option A, option B, option C, option D या option E. The right answer is option C. Gateways to allow a network to use the resource to another mainframe. हमरो इंटरनेट रे विभिन्न प्रकार नेटवर्किंग डिवाइस गुडा हम यूज करथो नेटवर्किंग पाई. बेसिकली जेमति कहिथाउ हमें हब, रूटर, स्विच. तो ता भीतर गोटे गेटवे अछि. तो गेटवे रो काम होला से आउ गोटे माने नेटवर्क भीतर को पसिबा पाई बाटो देखाइ थाए बा कनेक्शन दे थाए. तो गेटवे ऑप्शन सी, gateways to allow the network to use resources to another mainframe is the right answer. Next question for you, Microsoft DOS. It just टिके मु कहि दोउची हमर बहुत गुडा जो ऑपरेटिंग सिस्टम अछि जेमति कि विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स. एक्जेक्टली दैट DOS भी गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम जोटा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी डेवलपमेंट करितिला. माइक्रोसॉफ्ट DOS बोली त कहंती बा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोली कहंती. ताले सेटा हमर को प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव एंड नॉन ऑफ द अबव. एमान को भीतर कोटा होचे राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एटा हो जोटे सिंगल यूजर. आमे विंडोज रो फाइल गुडा को शेयरिंग करि पारुछु. आमे विंडोज रे थिबा फाइल गुडा को गोटे कंप्यूटर आ गोटे कंप्यूटर को इजीली शेयरिंग करि पारुछु. किंतु डॉस रे जो एनवायरनमेंट रे जोटा काम होताए से फाइलटा शेयरिंग हे पारे नाही. सेही सिस्टम रे केवल अवेलेबल हुए. सो डॉस इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एकक व्यवहारकारी ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ए डाटा वेयरहाउस इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ए डाटा वेयरहाउस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए, contains numerous naming conventions and formats. Option B, can be updated by the end users. Option C, organized around important subjects areas. Option D, contains only current data. Option E, none of these. A data warehouse is which of the following? Data warehouse एमानक भितरु कोटा इंक्लूड करे? प्रथम कथा आसला डाटा वेयरहाउस रो काम होला बिजनेस ओरिएंटेड डाटा गुडा को मेजर सब्जेक्ट गुडा को से टेक अप करि थाए. एंड इटा होची जेमति कि तमरो जोटा कोच लोन सैंक्शन करिवा, सेविंग्स करिवा, बैंक कार्ड गुडा को इश्यू करिवा, ए सब ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रही ए काम गुडा को करि थाए. तो व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर यू? ए डाटा वेयरहाउस इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? Yes, option C is the right answer. Organized around important subject areas. ताले जोड़ा को important information गुड़ा को सेटा data warehouse रे carry out होता है. Next question for you. Which of the following is not a feature of PC? PC means personal computer. Which of the following is not a feature of PC? PC रो एमान को भितरु कोटा गोटे characteristics नुआ. Option A, accuracy. Option B, actual intelligence. Option C, speed. Option D, high storage. And option E, none of these. PC रो एमानक भितरु कोटा गोटे characteristics नुआ. Anyone can give the response? Option B is the right answer. Actual intelligence. एमिति बोली किछि गोटे जिंस न थाए. Actually intelligence आमे जोटा कहिथौ सेटा होची artificial intelligence. So accuracy भी थाए, speed भी थाए, high storage भी थाए, but actual intelligence एमिति किछि गोटे जिंस न थाए. So option B is the right answer. Next question for you. Organization would prefer in-house development of software to. Organization would prefer in-house development of software to. Option A, maintain vendor relations. Option B, ensure that the development adhere to define the quality. Option C,
use the technology that is being widely used for the development. Option D, all of the above. Option E, none of these. Organization would prefer in which house development of software. Anyone can give the response? Which option is the right answer? Option B is the right answer. Ensures that the development adhere to define the quality. ताले एटा होची organization रो जो quality for the standards laid down for the organization सेटा को से carry out करिथाय. So option B is the right answer. Ensure that the development adhere to define the quality. Next question for you. The steps and tasks needed to process data such as responses to questions or clicking a onion are called option A, the operating system, option B, instructions, option C, application softwares, and option D, that is the system unit, and option E, none of these. Question is the steps and tasks are needed to process data such as responses to the quality questions or clicking onion are called. Which option is the right answer? Anyone can give the response? The right answer is option B, that is this thing is a instruction. It is a instruction बोली कोई जे not C. Option B is the right answer. That is the instructions. किसी instruction हमको दबाव पड़िबो जहाँ फल कि जोटा आमे सेटा को क्वेश्चन बोली कहिताउ जनरल जोटा क्वेश्चन बोली कहिताउ तो सेटा को instruction बोली कह जाय तो सेही अनुसार कंप्यूटर तापरे नेक्स्ट स्टेप रे काम करिथाय. Next question for you. A modem that cannot be moved from its position is called. A modem that cannot be moved from its position is called. Option A, acoustic coupler. Option B, intelligent modem. Option C, direct connect. Option D, fixed modem. Option E, none of these. A modem that cannot be moved from its position is called. Anyone can give the response? Option D is the right answer. Fixed modem. जेमति कि आम मोबाइल फोन रे आम इंटरनेट रो असेसिंग करूची तो इंटरनेट रो असेसिंग करा जाय किमिति ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉडेम. मॉडेम रो काम होला मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन करिबा माने एनालॉग फॉर्म रो डाटा डिजिटल फॉर्म को कन्वर्ट करिबा एंड डिजिटल फॉर्म रो डाटा एनालॉग फॉर्म को कन्वर्ट करिबा. तले जहां भी हो से मॉडेम को आमे बारंबार बाहर करि परिबा नाही. दैट इज द फिक्स्ड. सो that is known that cannot be moved from the position. The position रो जोटा मूव न होई पारे that is नो कहंती fixed mode. Next question for you. A dash is a private corporate network used exclusively by company employees. A dash is a private corporate network used exclusively by company employees. Option A, local area network. Option B, internet. Option C, peer-to-peer. Option D, internet. Option E, none of these. Anyone can give the response? Which option is the right answer? Yes. Option D is the right answer. That is the intranet. Intranet रे आमे कौन करी थाउ ना हमरो अनेक गुडा प्राइवेट नेटवर्क को गोटे कंपनी एम्प्लॉय मानको पई यूज करी थाउ जो माने कि परस्पर भितरे डाटा शेयरिंग करि परिबे. Next question for you. A dash means the data content in a database is accurate and reliable. Dash means that the data content in a database is accurate and reliable. एमानको भितरु कहार माने होउची जे डाटा गुडा को जहा डाटाबेस रे थाए सेटा होउची ठीक एबो सेटा होउची रिलायबल. ताले ऑप्शन ए डाटा इंटीग्रिटी. ऑप्शन बी डाटा रिडंडेंसी. ऑप्शन सी डाटा रिलायबिलिटी. Option D, data consistency, and option E, none of these. Which option is the right answer for this question? Option
is option A is the right answer. Data integrity बोली ताको कहंदी ताले what is the meaning of data integrity माने सेटा accuracy माने पूरा पूरी accurate रहइबो and सेटा होची consistency बा से डाटा रे किछ ओटे consistent थिबो बस डाटा किछ ओटे फिक्स थिबो and तार किछि माने absent माने से जगह रे किछ अल्टरेशन हो नथिबो चेंज हो नथिबो तो सेही बोली जिंसटा कहंदी डाटा integrity so this is the data means contents in database is accurate and reliable माने जो डाटा हमें देइछे सेटा रिलायबल भी ठीक भी एंड सेटा एक्यूरेट भी नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू दैट कंट्रोल्स द वे इन व्हिच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस एंड प्रोवाइड्स ए मींस by which user can interact with the computer dash controls the way in which computer system functions and provides a means by which user can interact with the computer एमानक भितर कोटा कंट्रोल करे जहा फल कि कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन करे एवं प्रोवाइड करे ओटे माने जहा फल कि हमें कंप्यूटर सहित इंटरेक्शन करि परिबा ऑप्शन ए द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन बी द प्लेटफॉर्म ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शन डी द मदरबोर्ड एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर gas controls the way in which the computer system functions and provides a means by which users can interact with the computer. Is option A is the right answer. OS by operating system that controls the overall operations of a computer. What is the operating system? Operating system is a part of system software. Operating system is a complex series of programs which controls the overall operations of a computer. जदि OS नथिबो ताले गोटे कंप्यूटर सिस्टम सहित यूजर इंटरेक्शन हेई परिबो नाही ताले गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम बा OS कहूचे दैट इज द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स which controls the overall operations of a computer. So operating system has the many more facilities जेमति कि ऑपरेटिंग सिस्टम जते कंप्यूटर रे इनपुट आउटपुट डिवाइस लागे ताको मैनेजमेंट करे डिस्क मैनेजमेंट करि थाए जिते डिस्क ड्राइव गुडा कथा यूजर इंटरफेस यूजर जो इंटरेक्शन करछि ताको भी मैनेजमेंट करथाय आ ऑपरेटिंग सिस्टम रो भूमिका कोन सीपीयू को भी मैनेजमेंट करथाय जोटा कंप्यूटर में ब्रेन बोली कहूचे तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरऑली मैनेज ए कंप्यूटर सिस्टम सो OS by operating system is the right answer. Next question for you, the time it takes a device to locate data and instructions and make them available to the CPU is known as. The time it takes a device to locate data and instructions and make them available to the CPU is known as. Option A processing cycle. Option B, clock speed. Option C, CPU speed. Option D, access time. Option E, none of these. The time it takes a device से जो समय गोटे डिवाइस निये टू लोकेट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस मेक देम अवेलेबल टू द सीपीयू जो डाटा बा इंस्ट्रक्शन ता माध्यम रे दिया जाउची एवं सेटा सीपीयू को पहुंचीबो तो सेटा को एग्जैक्टली टेक्निकल भाषा रे कोन बोली कहंती दैट टाइम इज नोन एज एक्सेस टाइम सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ताकू एक्सेस टाइम बोली कहंती एक्सेस स्पीड बोली भी कहंती माने जति समय रे डाटा एक्सेसिंग कहउची बा डाटा रे चालुची सो ऑप्शन D is the right answer, access time. Next question for you. System flowchart show. System flowchart show. Option A, evaluate and describe internal control within the process. Relationship that links the input processing and output of the system. Illustrates the sequence of logical operations performed by a computer while executing a program. Depict the arrangement of hardware components in a computer system, and option E, none of these. System flowchart shows. System flowchart एमानक भितर कोन शो करे? Yes, option B is the right answer. That is relationship that links the input processing and output of the system. ताले एटा को ही system flowchart बोली कहंती. माने गोटे क्वेश्चन टा गोटे माने भिन्न लागुची किंतु एग्जैक्टली जिंसटा बहुत सिंपल सिस्टम रो फ्लो चार्ट माने को इनपुट दबा प्रोसेसिंग करिवो तापरे आउटपुट दबो तो इते तो बडा लाइन गुडा को डिस्क्रिप्टिवली लागिले भी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर
relationship that link the input processing and output of the system जो अनुसार इनपुट होची प्रोसेसिंग होची एवं आउटपुट मिलिबो सेही सिस्टम टाको हमें सिस्टम फ्लो चार्ट बोली कहितो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द डैश इज द बॉक्स that houses the most important parts of the computer system. The dash is a box that houses of the most important parts of the computer system. Option A, hardware. Option B, software. Option C, input device. Option D, system unit. And option E, none of these. एमानक भितर कोटा से बॉक्स जहा कि कंप्यूटर रो बहुत इंपोर्टेंट पार्ट गुडा को कैरी आउट करिथे एस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सेटा को सिस्टम यूनिट बोली कहितो सिस्टम यूनिट रे बहुत सारा जिंस थाए मदरबोर्ड थाए एसएमपीएस थाए डिफरेंट पोर्ट्स गुडा को थाए डिफरेंट जोटा कहूचे हमें कोन मेमोरी गुडा का लगी थे डिस्क ड्राइव लगी थे हार्ड डिस्क लगी थे तो जहां भी हो कंप्यूटर रो मेजॉरिटी कंपोनेंट्स गुडा को बा कंप्यूटर रो मेजर जिंस गुडा को हमरो सेइथरे कैरी आउट हिताय बा सेइथरे जिंस गुडा को थाए सो ऑप्शन डी सिस्टम यूनिट द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच इज नॉट ए बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर एमानक भितर कोटा कंप्यूटर रो गोटे बेसिक फंक्शन नुह ऑप्शन ए एसेट डाटा ऑप्शन बी कॉपी टेक्स्ट ऑप्शन सी प्रोसेस डाटा ऑप्शन डी स्टोर डाटा एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस एमानक भितर कंप्यूटर रो कोटा बेसिक फंक्शन नुह ऑप्शन ए एसेट डाटा इनपुट ऑप्शन बी कॉपी टेक्स्ट ऑप्शन सी प्रोसेस डाटा ऑप्शन डी स्टोर डाटा एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस इस ऑप्शन बी कॉपी टेक्स्ट टेक्स्ट को कॉपी करिवा कंप्यूटर मेजर टास्क नुह बाकी एला इनपुट एक्सेप्ट करिवा डाटा को प्रोसेसिंग करिवा डाटा को स्टोर करिवा ए सब काम गुडा कहूची कंप्यूटर रो मेजर टास्क किंतु दा कॉपी टेक्स्ट करिवा बा गोटे टेक्स्ट अछि ताको कॉपी करके आनिबा सेटा गोटे कंप्यूटर रो मेजर टास्क नुह नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू generally you access the recycle bin though icon is located dash generally you access the recycle bin though an icon located जो recycle bin को हमें accessing करूचे गोटे icon आकार थाए generally एटा कोड थाए on the hard disk hard drive on the desktop on the shortcut menu in the properties dialog box and none of these which option is the right answer is ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जो आमे रिसाइकिल बिन को असेसिंग करूचे जनरली एटा हमरो डेस्कटॉप ऊपर थाए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द टास्क बार इज लोकेटेड डैश द टास्क बार इज लोकेटेड डैश ऑप्शन ए एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन ऑन द स्टार्ट मेनू ऑन द क्विक लॉन्च टूल बार एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड नॉन ऑफ दिस को जगह रे एटा थाए जनरली टास्क बार टा हमर को जगह रे थाए ऑप्शन ए एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन ऑन द स्टार्ट मेनू ऑप्शन सी ऑन द क्विक लॉन्च टूल बार एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन जनरली टास्क बार टा हम स्क्रीन रो बटन रे ही थाए बा तळे ही थाए जोटा हमें कहि थाउ कोन अदरवाइज आम डेस्कटॉप बोली कहू से डेस्कटॉप रो तळे ही टास्क बार देखा जाए जहार लेफ्ट हैंड साइड रे स्टार्ट बटन थाए एंड राइट हैंड साइड रे क्विक लॉन्च टूल बार थाए सॉरी डेट एंड टाइम इंडिकेटर थाए एंड जो टास्क गुडा आमे करि थाउ बा काम गुडा को करू थाउ से गुडा को मध्य टास्क बार रे टास्क बटन साकार आसी थाए सो ऑप्शन ए एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इफ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क without having the signal degrade you would use a if you wish to extend the length of a network without having the signal degrade you would use a तमे नेटवर्क जतले यूज करूचो से नेटवर्क रो लेंथ को एक्सटेंड करबा को चाहूचो बढ़ेबा को चाहूचो किंतु तारा क्वालिटी को डिग्रेडेशन करा जीवो नाही ताहले हमको कोन यूज करबा को पड़िबो ऑप्शन ए रूटर ऑप्शन बी रिपीटर ऑप्शन सी गेटवे ऑप्शन डी स्विच
and option E, none of these. Yes, option B is the right answer. That is known as repeater. जोठी आम सिग्नल वीक हम बोली आम एक्सपेक्टेशन करिथाउ बा जो डाटा सिग्नल को वीक ही जो बोली एक्सपेक्टेशन करिथाउ सेठी गोटे रिपीटर को कनेक्शन कर दिया जाए जहा कि रीस्ट्रेंथेन्स द डाटा ट्रांसफर ओवर ए नेटवर्क जो डाटा ट्रांसफर होउची बा ट्रांसमिट होउची से डाटा को सही जगह से पुणी रीस्ट्रेंथ कर देथाय बा रीजेनरेट कर देथाय. Next question for you. So option B is the right answer, repeater. Next question for you. A microprocessor is the brain of the computer and is also called. आमे जो CPU कहूचे बा माइक्रोप्रोसेसर कहूचे आमे समस्त जानिचे एटा होचे कंप्यूटर ब्रेन बोली ताको अदरवाइज कोन बोली भी कहजे. ऑप्शन ए माइक्रोचिप, ऑप्शन बी ऑप्शन ए मैक्रोचिप, ऑप्शन बी माइक्रोचिप, ऑप्शन सी microprocessor, option D calculator and option E software. जो तमे कहूछ CPU बा जोटा को अदरवाइज हमें माइक्रोप्रोसेसर बोली कहूचे ताको कोन बोली कह जाय अन्य शब्द रे. ऑप्शन ए माइक्रोचिप, ऑप्शन बी माइक्रोचिप, ऑप्शन सी माइक्रोप्रोसेसर, ऑप्शन डी कैलकुलेटर and option E software. The right answer is option B macrochip. ताको गोटे माइक्रोचिप बोली कह जाय, सॉरी माइक्रोचिप बोली कह जाय. ऑप्शन बी माइक्रोचिप बोली ताको कह जाय कारण सीपीयू टा होची अदरवाइज हम ताको माइक्रोप्रोसेसर बोली कहू, सीपीयू बोली कहू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोली भी कहू. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. सीपीयू रो फुल फॉर्म कोन एटा समस्त हम जानि छे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो इसके दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. द डैश इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द विंडो दैट इज करेंटली बीइंग यूज्ड. द डैश is the term used to describe the window that is currently being used. Option A display area, option B web window, option C wordpad window, option D active window and option E monitor. Anyone can give the response? A dash is the term used to describe window that is currently being used. Do you know what is the meaning of the sentence? इस sentence रा माने कोन? आमे से टर्म ता एग्जैक्टली कोन बोली कहू जोटा कि हमको बुझेई थाय जे एई विंडोटा फिटिची बोली बा एई विंडोटा वर्तमान कंप्यूटर स्क्रीन रे एक्टिव अछि बोली. एग्जैक्टली सेटा को ऑप्शन डी कह जाय एक्टिव विंडो. माने सेई विंडोटा एग्जैक्टली एक्टिव अछि माने जहा किछि काम करिवो सेई विंडो रा मैं एक्टिव काम करिबा. देन ताको मिनिमाइज करिबा आउ गोटे विंडो को पुनी मैक्सिमाइज करिबा एक्टिव करिबा सेते काम करि परिबा. सो ऑप्शन डी एक्टिव विंडो बोली ताको कह जाय. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. ए डैश इज द टर्म यूज्ड व्हेन ए सर्च इंजिन रिटर्न्स ए वेब पेज दैट मैचेस द सर्च क्राइटेरिया. बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एंड बहुत टेक्निकल क्वेश्चन. टिके टिके बुझी गले ए जिंसोडा को आराम से कहि हिजबो. हमें खाली कंप्यूटर गोटे सब्जेक्ट नुहे, दिस इज अ रिक्वायरमेंट. एटा भी हमको बुझिबा को पड़िबो. वर्तमान आईटी समय रे ए जिंस को हमको क्लियर होबा को भी पड़िबो. ए डैश इज द टर्म यूज्ड व्हेन ए सर्च इंजिन रिटर्न्स ए वेब पेज दैट मैचेस द सर्च क्राइटेरिया. ऑप्शन ए हिट, ऑप्शन बी ब्लॉग, ऑप्शन सी लिंक, ऑप्शन डी व्यू एंड ऑप्शन ई सक्सेस. A dash is the term used when a search engine returns a web page that matches the search criteria. Option A is the right answer, that is known as hit. ताले कौन सीटा ए जो टर्म ता सर्च इंजिन रिटर्न्स ए वेब पेज. सर्च इंजिन जो कहूचे हमें गोटे प्रकार सॉफ्टवेयर आमे जतबे कोनोसी इंटरनेट रो कंटेंट्स गुडा को बा इंटरनेट रे मिलुथिबा जिंसोडा को असेसिंग करिबा को चाहिबा से समय रे हम कंप्यूटर सिस्टम रे गोटे सर्च इंजिन अवेलेबल रहबा दरकार. ताले सर्च इंजिन रो काम होला यूजर रिक्वेस्ट को नै वेब सर्वर पाके पहुंचेबा अगेन पुनी वेब सर्वर रे थिबा इंफॉर्मेशन आनी यूजर कंप्यूटर रे डिस्प्ले करेबा. ताले सर्च इंजिन हो गोटे स्पेशल सॉफ्टवेयर जहा कि यूजर रिक्वेस्ट अनुसार वेब सर्वर रो वेब इंफॉर्मेशन को सर्च करिथाय. ताले से कहिबा कथा एग्जैक्टली को टर्म ता मे यूज करू जेते बळे आमे सर्च करिथा गोटे सर्च इंजिन रे गोटे टॉपिक को एबो से सर्च क्राइटेरिया को फुलफिलमेंट करिथाय. एग्जैक्टली से जिंसडा बाहर करिथाय.
तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ताको हिट बोली कहंती ताको रिट्राइवल ऑफ एनी आइटम बा जे कोन जिंस को बाहर करते सो हिट इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू which of the following are advantages of the CD-ROM as a storage media? Which of the following are the advantages of a CD-ROM as a storage media? Option A, CD-ROM disks retrieve data and information more quickly than the magnetic disk do. Option B, CD-ROM is an inexpensive way to store large amount of data and information. Option C, CD-ROMs make less errors than the magnetic media. Option D, all of the above. And option E, none of these. Which of the following are advantages of a CD-ROM as storage media? CD-ROM गोटे storage media. CD-ROM रे आमे डाटा स्टोर करू ताहले एमानको भितरु कोटा सेटार advantages. Option A, option B, option C, option D या फिर ऑप्शन ई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर CD-ROM is an inexpensive way to store large amount of data and information ताले CD-ROM टा होची गोटे एते दामिका जिंस नहे किंतु ता दियरे आमे कोन करि थाउ बहुत उडा डाटा स्टोर कर देई पारु बा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करि पारु सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू What are the four things needed to connect to internet? से चारिटा जिंस कोन जहा इंटरनेट से तो कनेक्टेड हबा पय हमको निहाती भाबे दरकार ऑप्शन ए मोडेम ऑप्शन मोडेम कंप्यूटर पीडीए एंड आईएसपी ऑप्शन बी टेलीफोन लाइन मोडेम कंप्यूटर एंड आईएसपी ऑप्शन सी टेलीफोन लाइन पीडीए मोडेम एंड कंप्यूटर ऑप्शन डी computer ISP modem and communication software option E monitor keyboard mouse and modem से चारिटा जिंस कोन जहा कि हमको दरकार पड़े गोटे कनेक्शन हबा पई इंटरनेट सहित ISP माने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पीडीए माने पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस तो एमानको भितर कोन दरकार पड़े ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कंप्यूटर दरकार पड़े जो थरे हमें इंटरनेट रे कनेक्शन करिबा आईएसपी माने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जे हमको इंटरनेट सेवा दउची मोडेम जहा कि मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन काम करि थाए एंड लास्ट इज द कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर सी जोटा कहउतली ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर बा जोटा कहउछ तमरो वेब ब्राउजर सेटा ओडा दरकार पड़िबो ताले एई सब जिंसोडा का हमरो हेई गले हमें इंटरनेट सहित कनेक्शन हेई परिबा बा इंटरनेट रे अवेलेबल होतिबा डाटा गुडा को एक्सेसिंग करि परिबा Next question for you. What is e-commerce? E-commerce माने कौन? Option A, buying and selling products and services over the internet. Option B, buying and selling international goods. Option C, buying and selling products and services not found in stores. Option D, buying and selling products having to do with the computers. Buying and selling of electronic goods. What is the meaning of actually e-commerce? Option A, option B, option C, option D या फिर option E. E-commerce तो exactly माने कौन? Option A is the right answer. Buying and selling of products and services over internet. इंटरनेट माध्यम रे ही जिंस किनिबा बा बिकिबा को ई-कॉमर्स बोली कहै छै आ अन्य किछि भी नुहे काहे कि ना इलेक्ट्रॉनिक जिंस भी बिक्री हुए हमर जनरल प्रोडक्ट भी बिक्री हुए स्टोर्स रे मिलुथिबा जिंस भी ई-कॉमर्स से पठै हबो स्टोर्स रे न मिलुथिबा जिंस भी पठै हबो ताले ए बडा को किछि माने नुहे माने होचे गोटे जिंस जहा कि हमर बाइंग बा सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स करा जाय इंटरनेट माध्यम रे सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इफ ए डिस्क ड्राइव फेल्स but the computer application running and using it can be continue processing this application is said to have been designed which of the feature if a disk drive fails जदि गोटे disk drive fail हो जाउची but computer application running computer application चालुची and using it can be continue processing एबो से continue भी रखुची processing रो this application is said to live designing the this feature ताले एमान को भितर को फीचर ता सेटा सेटिंग करथे ऑप्शन ए फॉल्ट टॉलरेंस ऑप्शन बी 100% ऑफ टाइम
option C, high reliability, option D, all of the above, and option E, none of these. Which option is the right answer? Anyone can give the response? No, not C. That is wrong answer. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Fault tolerance. ताको fault tolerance बोली कहा जाए. ताले fault tolerance पाउची एई भले गोटे प्रॉपर्टी जहा कि हमर ऑपरेशन कंटिन्यूएशन अछि बोली से हमको इन्फॉर्म करि थाए. So option A is the right answer. Next question for you. What are two examples of freeware? हमें बहुत जिनस सुनिचे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवेयर. ताले जो फ्रीवेयर रो एग्जांपल देटा कोन? ऑप्शन ए शेयरवेयर एंड फाइल शेयरिंग, ऑप्शन बी WinZip and Linux, option C Microsoft Word and the Google Toolbar, option D instant messaging and Google Toolbar, option E Microsoft PowerPoint and Microsoft Excel. What are two examples of freeware? एमान को भीतर freeware दीटा example कौन कौन? Option D is the right answer. गोटेला instant messaging and Google Toolbar. ताले जो Google रे हमें जो toolbar आसुची and जोटा कहूचे instant messaging. ए दुईटा जाक कहूची हमर गोटे जाय हमर कोन कहला एटा जाय हमर freeware रे जाय. Next question for you. Storage and memory differ with respect to which of the following characteristics? Storage जो कहूचे हमें जोटी डाटा स्टोर करा जाय, memory जोटा कंप्यूटर ब्रेन बोली कहूचे ताले एमाने डिफरेंट केमिति डिफरेंट को एस्पेक्ट रो एमाने डिफरेंट बा एमानकर को विशेषत्व बा कैरेक्टरिस्टिक्स पई एमाने गोटे थारु आ गोटे भिन्न. ऑप्शन ए रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी प्राइस, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. हमर स्टोरेज मेमोरी भीतर डिफरेंस देखिया बोले सब अछि, रिलायबिलिटी, प्राइस, स्पीड ए सब दृष्टि ताले कंप्यूटर मेमोरी टा होचे गोटे वोलाटाइल नेचर जोटा बेसिकली राम उद्देश्य रे कह जाईछि एवं कंप्यूटर जोटा कह होचे मेमोरी ता माने एटा राम भी गोटे मेमोरी बट बेसिकली एटा सेकेंडरी मेमोरी को फोकसिंग करा जाउछि जोथि कि डाटा स्टोर हेक रहिले परवर्ती मुहूर्त पे हम व्यवहार करि परिबा. ताले ए सब दृष्टि देखिले ए सब कैरेक्टरिस्टिक्स गुडा को फुलफिलमेंट हबो जदि स्टोरेज आ मेमोरी भीतर हम डिफरेंस को बाहर करबा को चाहिबा. Next question for you. To reload a web page, press the dash button. गोटे वेब पेज कोनोसी दृष्टि रु करप्ट हे गला बा नेटवर्क इंटरनेट हमर कटि गला पुनी ताको हमको रीलोड करिबा को पड़िबो ताले हमको को बटन को प्रेस करिबा को पड़िबो. ऑप्शन ए रीलोड, ऑप्शन बी रीडू, ऑप्शन सी रीस्टोर, ऑप्शन डी ctrl and option E refresh. Yes, option E is the right answer. हमको रिफ्रेश बटन को प्रेस करिया को पड़िबो. वेब ब्राउजर्स इंक्लूड ए रिफ्रेश बटन दैट अपडेट्स द करंटली डिस्प्लेड वेब पेजेस. ताले रिफ्रेशिंग करी की करंटली जोटा वेब पेज ता अपलोड हेतिबो ताको हमें देखि परिबा. रीलोड और रिफ्रेश मींस टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ए वेब पेज ऑन द कंप्यूटर. ताले सेटा पुनी आउथरे से स्टार्ट करिवो. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. द डैश कंट्रोल्स ए क्लाइंट कंप्यूटर्स रिसोर्स. एमान को भितर कोटा क्लाइंट कंप्यूटर रिसोर्स को कंट्रोल करि थाए. ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शन सेट, ऑप्शन बी एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी सर्वर एप्लीकेशन एंड लास्ट इज योर कंपाइलर. एमान को भितर कोटा हमरो कंट्रोल करि थाए जे क्लाइंट कंप्यूटर रिसोर्स को बा क्लाइंट रो कंप्यूटर को. ऑप्शन C is the right answer. Yes, option C is the right answer. हमरो कोन पई ना ए एस्पेक्ट रो हमें कहि परिबा एटा ठीक आंसर जे ऑपरेटिंग सिस्टम ता होचे मूल जिंस. मु प्रथम भी तुमको कहि आछि ओएस बिना कोनोसी जिंस कंट्रोल हे परिबो नाही. ताले ऑपरेटिंग सिस्टम बा ओएस सेही मूल जिंस जहा कि क्लाइंट रो कंप्यूटर को कंट्रोल करि थाए. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. The dash process, the process of transferring files from one computer to internet to a computer is called. Very easy question, very simple question. Option A uploading,
option B downloading, option C FTP, option D JPEG, and option E downloading. Anyone can give the response? The process of transferring files from one computer on internet to your computer is called. गोटे कंप्यूटर रू डाटा तम कंप्यूटर को आनिबा कोले से प्रोसेस को कोन बोली कहंती? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डाउनलोडिंग बोली ताको कहंती. Okay, next question for you. Which media have the ability to have data information stored but written on them by users more than once? Which media have the ability to have data or information stored written on them by users more than once? एमानक भितर कोटा डाटा रिटेन रो कैपेसिटी मोर देन वंस कैरी आउट करे. ऑप्शन ए CDRW डिस्क, ऑप्शन बी CDR डिस्क, ऑप्शन सी जिप डिस्क, ऑप्शन डी ऑप्टी डिस्क, ऑप्शन ई बोथ CDRW डिस्क एंड जिप डिस्क. Anyone can give the response? Which media have the ability to have data or information stored written on them by users more than once? Anyone can give the response? Option E is the right answer. ताको ऑप्टी डिस्क बोली कहंती. तो ऑप्टी डिस्क कहले एटा होची गोटे रीराइटेबल डिस्क जोटा कि हमर जिप डिस्क हिसाब रे भी काम करे. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म बाय द सर्वर्स? हमें जो जानि छी जो मेन कंप्यूटर जे कि वेब कंटेंट्स गुडा का हमको सर्व करि थाए ताको सर्वर कहंती. एंड सर्वर सहित कनेक्टेड होतिबा कंप्यूटर गुडा को हमें गोटे गोटे क्लाइंट बोली कहिताउ. ताहले से जो सर्वर सहित कनेक्टेड होतिबा बा सर्वर सहित कनेक्शन रे रहउतिबा कंप्यूटर गुडा को हमरो ताकू को कामटा करिथे. ऑप्शन ए डेटाबेस शेयरिंग, ऑप्शन बी ईमेल प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग वेबसाइट्स, ऑप्शन डी स्टोरेज, ऑप्शन ई वर्ड प्रोसेसिंग. Which of the following functions are not performed by servers? सर्वर द्वारा एमानक भितरु को कामटा हुए नाही. Anyone can give the response? सर्वर द्वारा एमानक भितरु को कामटा हुए नाही. ऑप्शन ई स्टोरेज हुए नाही. आउ सब किछि फंक्शन गुडा को सर्वर ही करि थाए. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Vendor created programs modifications are called. Vendor created programs modifications are called. Option A antivirus, option B patches, option C holes, option D fixes, option E overlaps. And it is भितरु कोटा होचे राइट आंसर. Vendor created programs modifications are called. Vendor जोटा माने देई थाए बा जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम देई थाए पर जदी से प्रोग्राम रे किछि करप्ट हेई थाए ताकू पुनी हमें किछि रीमॉडिफिकेशन करि थाउ. बा रीमॉडिफिकेशन कला पर से सॉफ्टवेयर ठीक से चली थाए ताले एग्जैक्टली ताकू कोन बोली कहंदी कंप्यूटर भाषा रे? ताकू ऑप्शन बी पैचेस बोली कहंदी. ताकू पैच करि दिया जे. पैच कर देला पर से प्रोग्राम पुनी ठीक ठाक चले. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Storage media such as a CD read and write information using. Storage media such as a CD read and write information using. ताले CD जो read और write करि था information ताको कहा को यूज करि था. ऑप्शन ए magnetic dots, ऑप्शन बी a laser beam of red light, ऑप्शन सी magnetic strips, ऑप्शन डी all of the above, and ऑप्शन E none of these. Storage media such as a CD read and write information using. Which option is the right answer? Option B is the right answer. गोटे लेजर बीम रे राइट. आमे जदी देखिबा डिवाइस को फिटेबा ताधरे ता राइटिंग होता है गोटे रेड लाइट पडु थाए. से रेड लाइट जो अनुसार पडु थाए सेही अनुसार से रिकॉर्डिंग करी करी चली थाए. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए लेजर बीम ऑफ रेड लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. You can use the dash bar to type a URL and display a web page, or type a keyboard to display a list of related web pages. एमान को भीतर कोटा व्यवहार करे चलते जहा कि URL हमें लिखिला बळे बा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जोटा कहूचे सेटा लिखिला बळे जोथरे कि लिस्ट ऑफ रिलेटेड वेब पेज गुडा से डिस्प्ले करै थाए. ऑप्शन ए
title, option B menu, option C search, option D web, and option E address. Anyone can give the response? You can use dash bar to type a URL and display a web page, or type a keybar to display a list of related web pages. Anyone can give the response? The right answer is option E, address. ताको address बोली कहा जाए तो वेब रे हमें address बार ही address हमको लिखिବାକୁ पड़िबो, URL लिखिବାକୁ पड़िबो। URL ମାନେ ଯେମିତି କହିथाव हमें http://www.microsoft.com/index.html ଗୋଟେ कंप्लीट URL ର उदाहरण जहाँ भी हो सेही बडे ଗୋଟେ वेब एड्रेस लिखिବାକୁ हेले हमें मुख्यतः एड्रेस बार ର यूज करथाव। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, द डैश enables you to simultaneously keep multiple web pages open in one browser window. The dash enables you to simultaneously keep multiple web pages open in one browser window. Option A pop-up helper, option B tab box, option C tab row, option D address bar, and option E escape key. The dash enables you to simultaneously keep multiple web pages open in one browser window. एमानक भितर कोउटा हमको एनाबल करे साइमल्टेनियसली मल्टीपल वेब पेज को ओपन करिवा पई ब्राउजर विंडो रे. ऑप्शन ए पॉपअप हेल्पर, ऑप्शन बी टैब बॉक्स, ऑप्शन सी टैब रो, ऑप्शन डी एड्रेस बार, एंड ऑप्शन ई एस्केप की. Anyone can give the response? Yes, option C is the right answer. ताको टैब रो बोली कहंती. Next question for you, which of the following could be digital input device for computer? Which of the following could be digital input device of computer? एमानक भितर कोउटा होची डिजिटल इनपुट डिवाइस हेई परिबो कंप्यूटर पई. ऑप्शन ए माइक्रोफोन, ऑप्शन बी डिजिटल कैमकोडर, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज. Anyone can give the response? No, option A is not right answer. That is option D, all of the above. सबु किछि गोटे गोटे डिजिटल हमरो इनपुट डिवाइस हेई परिबो. माइक्रोफोन भी हेई परिबो, डिजिटल कैम कोडर भी हेई परिबो, ऑप्शन सी स्कैनर भी हेई परिबो. So all are the right answers. Next question for you, a sales clerk at a checkout counter scanning a tag on the item rather than keying it into the system using. गोटे सेलर जेतेबेले कोनसी जिंस सेलिंग करूची से जो आइटम रो जिंस गुडा को काउंटर रे रिकॉर्ड न करी गोटे जिंस को यूज करि परिबो सेटा कोनटा. ऑप्शन ए आइटम डाटा ऑटोमेशन, ऑप्शन बी इनपुट ऑटोमेशन, ऑप्शन सी स्कैनिंग ऑटोमेशन, ऑप्शन डी सोर्स डाटा ऑटोमेशन, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज. Anyone can give the response? Option D is the right answer, source data automation. मूल डाटा ऑटोमेशन को से नहीं से जिंसोडा प्रोसेसिंग करि परिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजक्शन विथ. मेन मेमोरी कहा सहित कंजक्शन थाई काम करि पारे. ऑप्शन ए RAM, ऑप्शन बी स्पेशल फंक्शन कार्ड्स, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी इंटेल, ऑप्शन ई all of the above. Main memory works in conjunction with. Main memory our conjunction हिसाब रे काम करे. S. Option C CPU is the right answer. Okay, आउ थरे कहबी. Main memory works in conjunction with. Main memory हमर काम करे कहा सहित थाई की बा main memory कंप्यूटर रे काम करे कहा सहित थाई की. ताले ऑप्शन ए RAM, ऑप्शन बी स्पेशल फंक्शन कार्ड्स, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी इंटेल, एंड ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. CPU सहित कनेक्टेड थाई काम करि पारे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एवरी कंप्यूटर हैज ए डैश, मेनी आल्सो हैव. एवरी कंप्यूटर हैज ए डैश, मेनी आल्सो हैव. ऑप्शन ए operating system instruction sets, option B operating system a client system, option C application programs and operating system,
Option D, application programs a client system. Option E, operating system application programs. Which option is the right answer? Every computer has, yes, many also have. Anyone can give the response? Operating system रे कौन सब थाए? Option E is the right answer. Operating system application programs. गोटे computer system रे operating system थाए and many also have application programs. बहुत गोटे operating system and बहुत गुड़े application programs थाए. So option E is the right answer. Operating system and application programs. Next question for you. The collection of links throughout the internet creates an interconnected network called. The collection of links throughout the internet creates an interconnected network called. Option A, web. Option B, www. Option C, World Wide Web. Option D, all of the above. Option E, wide area web. Anyone can give the response? The collection of links throughout the internet creates an interconnected network called. से जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टा तैयारी करंदी ताको कोन बोली कहंदी? ऑप्शन ए वेब, ऑप्शन बी www, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव एंड ऑप्शन ई वाइड एरिया वेब. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ताको ऑल ऑफ द अबव ए सब किछि कुआ जे ताको वेब बोली भी कुआ जे. www माने ही वर्ल्ड वाइड वेब एंड ऑप्शन 3 रे भी थिला वर्ल्ड वाइड वेब. जहाँ भी हो all सबु किछि. Next question for you. Cache and main memory will lose their contents when the power is off. They are cache memory जो हमें कहू, जो main memory हमें कहू, से माने information गुड़ा contents गुड़ा को नष्ट हो जाए power off हवा सहित. ताहले से माने कौन? Static. Option B dynamic. Option C volatile. Option D non volatile. Option E faulty. कैची बा मेन मेमोरी थिबा इंफॉर्मेशन लूज हो जाए, नष्ट हो जाए, ताले से माने बाय द वे कोन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. से माने उसनी वोलेटाइल बोली कहंती. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. ए पर्सन हु यूज्ड हिज और हर एक्सपर्टाइज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और टू डू डैमेज इज ए. A person who is used to her expertise to gain access other people's computer to get information illegally to do damage. Illegally data को accessing करिबा बा डाटा ऊपर स्ट्रेच करिबा बा डाटा को हमरो डैमेज करिबा उद्देश्य रे जे करा जाय सेटा को एग्जैक्टली कोन बोली ताको कुआ जाय? हैकर. ऑप्शन बी स्पैमर. ऑप्शन सी इंस्टेंट मैसेंजर. ऑप्शन डी प्रोग्रामर एंड ऑप्शन ई एनालिस्ट. ताकू एग्जैक्टली हमर कोन बोली कुआ जाय? ताकू हैकर बोली कुआ जाय. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हैकर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. ए पॉपुलर वे टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स विदाउट एवर गोइंग टू ए क्लासरूम इज कॉल्ड. ए पॉपुलर वे टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स विदाउट एवर गोइंग ए क्लासरूम इज कॉल्ड. कोन से गोटे क्लासरूम को न जाई कंप्यूटर विषय जानिबा ताकू कोन कहंती? ऑप्शन ए आइसोलेटेड लर्निंग. Option B I-learning. Option C e-learning. Option D close learning and option E distance learning. Which option is the right answer? Option C is the right answer. ताकू e-learning बोली कहंती. ताले कोन से गोटे क्लासरूम को न जाई आमे जदी घरे पढ़ी पारुचे बा जे कोन से जगह पढ़ी पारुचे सेटा को एक्चुअली e-learning बोली कहै जाय, आउ किछि भी नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Microsoft Office is an example of. Microsoft Office is an example of. Option A open source software. Option B closed source software. Option C horizontal market software. Option D vertical market software and option E compiler. Microsoft Office is an example of. Option A open source software. Option B closed source software. Option C horizontal market software. Option D vertical market software
and option E, compiler. Which option is the right answer? The right answer is your option C. That means it is a horizontal market software. Next question for you. Which of the following is a storage device that uses rigid, permanently installed magnetic disk to store data or information? Which of the following is a storage device that uses rigid, permanently installed magnetic disk to store data or information? Option A, hard disk. Option B, floppy disk. Option C, permanent disk. Option D, optical disk. And option E, none of these. Anyone can give the response? Option A is the right answer. That is the hard disk. Next question for you. A dash is a composed of several computers connected together to share resource or data. ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ସେ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଅନେକ ଗୁଡାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେସନ ଗୁଡାକ ସେୟାରିଂ କରିଥାଏ? ଅପସନ ଏ ନେଟୱାର୍କ, ଅପସନ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ, ଅପସନ ସି ବ୍ୟାକବୋନ, ଅପସନ ଡି ହାଇପରଲିଙ୍କ and option E, protocol. Anyone can give the response? Option A is the right answer. ताकू गोटे नेटवर्क बोली कहती. Okay, next question for you. Dash are the attempts by the individuals to obtain confidential information from you by falsifying their identity. ସେମାନେ ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟି को false କରି ତମଠାରୁ information को accessing करिया करନ୍ତି confident way रे भरोसा योग्य way. ସେମାନଙ୍କୁ exactly कौन सी जिनिसटा actually? Option A, computer virus. Option B, phishing tricks. Option C, spyware scams. Option D, viruses. And option E, phishing scam. Exactly सेटा कौन बोली कुआ जाए? Exactly ताको option E, phishing scam बोली कुआ जाए. तो option E, phishing scam is the right answer. The main job of a CPU is to CPU ର ମୁଖ୍ୟ କାମ. Option A, store data information for future use. Option B, carry out program instructions. Option C, process data and information. Option D, only B and C. Option E, none of these. CPU ର main task टा कौन? Option D, yes, only B and C, carry out program instructions এবং process data and instructions. So both B and C is the right answer. Next question for you. Which of the following is an examples of optical disk? एमानक भितर कोटा गोटे ऑप्टिकल डिस्क रे एग्जांपल? मैग्नेटिक डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मेमोरी डिस्क, डाटा बस डिस्क एंड नॉन ऑफ दीज. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बा डीवीडी जोटा कहउछ एटा को ही गोटे हमर ऑप्टिकल डिस्क बोली कहै छै. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. The folder retains copies messages that have started but are not yet ready to send. The dash folder retains copies of messages that you are not have started to yet ready to send. सेटा कोथरे थाए? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ड्राफ्ट रे सेव हे कि थाए किंतु सेटा पठिया आइ पार न थाए. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ड्राफ्ट. Next question for you. Which of the following is an example of a storage device? एमानक भितर कोटा गोटे storage device? Option A, tapes. Option B, magnetic disk. Option C, DVDs. Option D, all of the above. And option E, none of these. So option D is the right answer. Yes, option D is the right answer. All of the above. ये सब किछि गोटे गोटे storage device रे example. एबे आमे last question को जिबा. An example of processing device would be गोटे processing device रो कोन characteristics? A tablet PC, a magnetic ink reader, a special function cards, a scanner. Processing device रो एमानक भितर कोटा? Option A, tablet PC is the right answer. Okay. Due to time, this topic is closed this point, and on the next class onwards,
I will bring some interesting and some awareness computer questions for you. And this class is over for today. And thank you for joining this class.